સુરતની વરાછા પોલીસે 6 કિલોથી વધુ ગાંજાના જથ્થા સાથે ઓડિશા વાસીને ઝડપી પાડ્યો છે. સુરત પોલીસ નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત સિટી અભિયાન ચલાવી રહી છે, ત્યારે વરાછા પોલીસે ઓડિશાથી ગાંજાનો જથ્થો લાવી ડિલિવરી કરવા જતા ઓડિશાવાસી એવા હાલ ઓલપાડના સાયણગામ ખાતે રહેતા બિક્રમા ઉર્ફે શિલુ પૃથ્વી બી સિદ્ધર સ્વાઈનને અશોકનગર પટરી પાસે આવેલા જગન્નાથ મંદિર પાસેથી ઝડપી પાડ્યો હતો અને તેની પાસેથી 64,000થી વધુની કિંમતનો 6 કિલોથી વધુ ગાંજાનો જથ્થો તથા મોબાઈલ સહિત 69,000થી વધુની મત્તા કબ્જે કરી હતી. मेहरबान सीपी सर के आगेवानी में हमने नो ड्रग्स इन सूरत कैंपेन का आयोजन किया है, जिसके तहत कल वराछा पुलिस स्टेशन के विस्तार में अशोकनगर पटरी के पास जगन्नाथ मंदिर के नज़दीक हमें एक बातमी मिली कि एक आदमी जिसका नाम बिक्रमा स्वाइन है और जिसको शीलू कह के भी बुलाते हैं, वो वहाँ पे गांजे का बेचान करता है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा मुद्दा माल वहाँ पे है. तो इस बातमी के आधार पर वराछा पुलिस की टीम ने, जिसमें PIRB गोजिया, PSI AG परमार, लोक रक्षक लालजी भाई बाबू भाई ने एक कंबाइंड टीम बनाई और वहाँ पे एरिया पे रेड किया, जिसके तहत हमें वहाँ पे 6 किलो 424 ग्राम गांजा बरामद हुआ और नानी नानी छोटी छोटी पुड़िया भी गांजे की मिली, जिसमें कुल मुद्दा माल 69,310 रुपीज़ का है. इसके तहत हमने NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं.